Question number 7, exercise 10.5 is, if diagonal of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it's a rectangle. What is given here? If the diagonals of cyclic quadrilateral, let's take a quadrilateral ABCD. It's given it's cyclic and its diagonals are the diameters of the circle. These diagonals are the diameters of the circle and it's cyclic. That means the all 4 points lie on a circle, and AC and BD are diameters of the circle. It's given here. Prove that it's a rectangle. You are to prove it is a rectangle. It's too easy. How to do it? As we know that, yes, angle in semicircle is equal to 90 degree. It's given here that these are diagonals, that AC and BD, they are diagonals. Then the angle in made by diameter is equal to 90 degree. So these all angles will be 90 degree. As we know that if this is a diameter, then diameter angle made by the diameter is 90 degree, or you can say angle in semicircle in 90 degree made by the diameter. So similarly, angle A, by this theorem you can say angle A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to 90 degree. This implies ABCD is a rectangle. Next, question number 8 is, if non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is a cyclic. Now we have given a trapezium here where these two sides are parallel. Let's take ABCD. Then definitely these two sides are non-parallel, AD and BC, and it's given equal, that AD is equal to BC. What we have given here, a trapezium whose non-parallel sides are equal, it means AD is equal to BC. That is given. ठीक है, non-parallel sides are equal. Now you are to prove that it's cyclic. साइक्लिक प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है. तो कैसे प्रूव करेंगे? एडजेसेंट एंगल्स का सम तो ऑलरेडी 180 होता है, बिकॉज ए बी और डी सी दोनों पैरेलल हैं. तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. लेकिन प्रूव आपको ए और सी करना है, दैट ए इधर ए प्लस सी इक्वल टू 180 और बी प्लस डी इक्वल टू 180, कोई भी एक पेयर. तो कोई भी एक पेयर के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम ये प्रूव कर दें दैट एंगल D is equal to C. See, that is already given here that it's cyclic, sorry, it's trapezium, then AB is parallel to DC. This implies A plus D is equal to 180 degree, right? Then अगर हम प्रूव कर दें कि D जो है वो C के इक्वल है, तो क्या होगा? A plus C 180 हो जाएगा. A plus C 180 होते ही ऑपोजिट एंगल्स 180, इधर पेयर, एक पेयर ऑपोजिट एंगल का 180 होते ही ये क्या बन जाएगा आपके पास? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब हमें प्रूव ये करना है कि एंगल D जो है वो C के इक्वल है. तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. लेट्स टेक परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A से AM एंड B से BN. हमने A पॉइंट और B पॉइंट से दो परपेंडिकुलर्स ले लिए, that AM and BN, right? AM and BN are two perpendiculars from point A and B by the construction. अब इन दोनों triangles को हम congruent prove कर देंगे, right? In these two triangles will prove congruent. To prove angle D and C equal, C और D को इक्वल प्रूव करना है तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. हमने सिर्फ एक ही चीज की है कि हमने कंस्ट्रक्शन की है, ए और बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर्स लिए हैं. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास क्या क्या है? AD is equal to BC, that is given. Okay,
then angle 1 is equal to angle 2 by construction. AM is equal to BN. AM or BN equal है. What the reason is here? The reason is because the opposite sides are parallel, then definitely these perpendicular distance will be same. ठीक है? So then by RHS, you can say here the triangle ADM is congruent to triangle BCN, and this implies angle D is equal to angle C by CPCT. Also, A plus D is equal to 180 degree. This implies A plus C is equal to 180 degree. This implies it's a cyclic quadrilateral because either pair of opposite angles equal to 180 degree. This implies it's cyclic quadrilateral, right? Again, I'm repeating the question. Here we have given a trapezium where non-parallel sides are equal. Non-parallel sides are here AD and BC. AB and DC are parallel sides. आपको प्रूव करना है साइक्लिक. तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की 90 डिग्री एंगल लिया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. सी हाउ these two triangles we proved congruent. ठीक है, because these two sides are equal, 90 degrees angles are equal, and these perpendiculars are also equal. Then by RHS these two triangles are congruent, and by CPCT angle D is equal to angle C. Angle DC के equal है, and A plus D 180 डिग्री क्योंकि opposite sides parallel हैं, तो A plus C 180 हो गया आपके पास. A plus C मतलब इधर पेयर ऑपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री हो गया. आपको एक पेयर इनफ होता है प्रूव करना, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो इधर पेयर ऑफ opposite angles is equal to 180, sum of opposite angles is equal to 180 degree. That means ABCD is a cyclic quadrilateral. Next, question number 9 is two circles intersect at 2 points B and C. These are the 2 points B and C where the circles intersect. Through B, two line segments ABD, this line segment ABD and PBQ, this, they are intersecting at point B, are drawn to intersect the circles at A and D. Circles को ये A और D पे कट कर रहे हैं and P पे Q पे. सर्कल्स को ये जो लाइंस है A और D और P और Q पे कट कर रही हैं. प्रूव दैट एंगल ACP आपके पास एंगल है दिस वन, एंड QCD दिस एंगल. इन दोनों एंगल्स को आपको प्रूव करना है. सो what you have given here, two lines are intersecting. These are the straight lines given here. Two circles are intersecting at point B and C, जिसमें दो lines इसमें intersect कर रही हैं, और आपको प्रूव करना है कि एंगल दिस एंगल 1, this angle 2, they are equal. So what we will do here, जो condition हमें given है उसी को apply करेंगे. Simply we have given two line segment intersect कर रहे हैं तो वो दो angles बनाते हैं vertically opposite. So we can just say that angle 3 is equal to 4. Right? I hope you can see here I have taken this angle 3 and this angle 4. They will be equal because two lines are intersecting like this, so vertically opposite angles will be equal. Then I have taken this as 1 and this as 2. इनको equal prove करना है. If you will shift it, अगर आप ध्यान से देखो तो AP arc है. AP arc है. It's like this. AP is an arc. एक एंगल बन रहा है B पे, ठीक है, एक एंगल बन रहा है C पे, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. B पे जो एंगल बन रहा है वो 3 है, C पे जो एंगल बन रहा है वो 1 है.
एंगल्स इन सेम सेगमेंट होंगे, एपी इज एन आर्क, तो एपी से दोनों एंगल्स बन रहे हैं सर्कल के अदर पॉइंट्स पे, तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल, दीज विल बी एंगल्स इन सेमी सर्कल, सॉरी एंगल्स इन सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होते हैं, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के. So how to do this question? First of all, we have taken here, we can say here angle 1 is equal to angle 3, angles in semicircle, angle 2 is equal to angle 4, angles in semicircle. Also, angle 3 is equal to angle 4, vertically opposite angles. This implies 1 is equal to 2. 1 और 3 एंगल्स बना रहे हैं सेमी सर्कल में, 2 और सॉरी सेम सेगमेंट में, 2 और 4 सेम सेगमेंट में एंगल्स बना रहे हैं, सो दे आर इक्वल. 3 और 4 भी इक्वल हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, तो 1 और 2 अपने आप इक्वल हो जाएंगे. एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सॉरी if I took here semicircle, angles in same segment. सेम सेगमेंट कैसे होता है आपके पास, if this is an arc or a chord AB, then let's take any 2 points and join them with the AB arc, then these two angles are called angles in same segment, एक ही segment में है, so they are equal. The same we have done here in this question. Angles in same segment, they are equal, so 1 is equal to 3, 2 is equal to 4, and 3 or 4 are equal because they are vertically opposite, so that's why 1 and 2 are also equal here, right? Let's repeat it. What you have given here, two circles intersect at B and D, then we have two lines, it's ABD and PBQ. आपको प्रूव क्या करना है, जो एंगल सी पे बन रहा है, सी दिस पॉइंट इज सी पॉइंट, सॉरी जो एंग पॉइंट सी पे बन रहा है एंगल, दैट इज इक्वल एपी से बन रहा है ये, और जो एंगल डी क्यू से बन रहा है ये दोनों इक्वल हैं. कैसे प्रूव करेंगे, अगर आप टर्न करोगे तो जो ये वाला एंगल है जो बी पॉइंट पे बन रहा है और जो सी पे बन रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, 1 is equal to 2, एंगल्स इन सेम सेगमेंट. सिमिलरली 3 is equal to 4, एंगल्स इन सेम सेगमेंट. 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, आपस में इक्वल है, तो 2 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, राइट. Next question, 10th is, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. ठीक है, if two circles are drawn, if two circles are drawn taking two sides of triangle as diameter, let's form two triangles first of all. This is a triangle and this is also a triangle. If circles are drawn taking two sides of triangles as diameter, दो sides ले ली, एक side हम ये ले सकते हैं, इसको diameter ले लो और एक इस side को diameter ले लो, ठीक है. Then prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. अगर आप यहाँ से circle draw करते हो, ठीक है, and like this also, क्योंकि आप जो ये triangle this side you are taking as diameter, तो यहाँ से आपने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, तो आपको प्रूव करना है दैट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड. बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का वो ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट. आपको ये प्रूव करना है, से इफ दिस इज ए बी सी,
ठीक है. If the circles are drawn using two sides of a triangle, so I have taken here two triangles, you have to take only single triangle here. Let's take this single triangle. इसकी दो sides को पे आपने circle draw कर दिए like this. ओके okay? आपको प्रूव करना है, ये पॉइंट तो ऑलरेडी आपके पास है, ABC इज अ ट्राइंगल हियर. ये पॉइंट आपने D ले लिया. अब जो आपका न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट आया सर्कल्स का, दैट इज D. A पॉइंट वाज अर्लियर ऑलरेडी देयर, जहां से आपने लिया है सर्कल. आपको D प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड पे लाई करता है DC पे. दैट यू आर टू प्रूव हियर कि जो ये D पॉइंट है वो थर्ड BC पे लाई करता है. राइट. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. हियर यू हैव गिवन अ ट्राइंगल ABC. इनकी कोई भी दो साइड्स लेकर आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, उनको डायमीटर लेकर. AB को डायमीटर ले लिया, AC को डायमीटर ले लिया. दो साइड्स ड्रॉ, दो सर्कल्स ड्रॉ कर दिए. अब आपको प्रूव करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है, एक तो A ही हुआ जहां से आपने खुद लिया सर्कल. दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया D ले लिया सपोज आपने, जहां पे सर्कल मीट कर रहे हैं. आपको बताना है कि जो ये D पॉइंट है वो थर्ड साइड पे लाई करता है. सो वो आपको ये बताना है कि वो BC पे लाई करता है. ठीक है. BC पे लाई करता है तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले आप AD को ज्वाइन कर दो. ओके. AD इज द कॉमन कोड नाउ. ये आपके पास डायमीटर है. दिस वन AB is the diameter. Then this angle will be 90-degree angle because of semicircle. सेमीसर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, डायमीटर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री. सिमिलरली AC इज ऑल्सो द डायमीटर. तो AC भी कौन सा एंगल बनाएगा सर्कल में? 90 डिग्री. अब एंगल 1 and 2 both are 90 each. This implies 1 plus 2 is equal to 90 plus 90, 180 degree. So 180 है, इसका मतलब ये सिंगल लाइन है. BC is a single line and D is on a point which is lying on this line BC, and that was to prove. राइट. एंगल इन सेमी सर्कल 190 डिग्री, 290 डिग्री, दोनों को ऐड किया 180, 180 सम आया. इसका मतलब BC एक सिंगल लाइन है जिस और D पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं, तो दैट मीन्स D पे लाई कर रहा है. राइट. क्वेश्चन नंबर 11 is ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. एक कॉमन हाइपोटेन्यूज ले लिया AC. ठीक है. and two right triangles are, you can like take like this also, this common hypotenuse. दो triangles हैं. ठीक है, like this. It will be 90 degree angle. AC is the hypotenuse. Then the triangles will be like this, 90 degree angle and 90 degree angle. Right. Here I have taken ABC is a right angle triangle and ADC also right angle triangle. AC common hypotenuse है और आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एंगल CAD this angle is equal to angle CBD this angle. इन दोनों एंगल्स को आपको प्रूव करना है. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव angle 1 is equal to angle 2. So simple. एंगल B और एंगल D 90-90 है. राइट. दोनों का सम हो गया 180 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो ABCD कैसा हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में DC आपके पास क्या हो गई? कोड. और जो ये DC कोड है ये दो एंगल्स बना रही है, एक पॉइंट A पे एक पॉइंट B पे सर्कल के. तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? एंगल्स इन सेम सेगमेंट. DC is forming two angles, one at A, one at B. Then these two angles will be angles in same segment. So angle 1 is equal to angle 2 because ABCD lie on the circle. Okay. Next, last question.
Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. Question number 12. A cyclic parallelogram is a rectangle. Let's take a parallelogram. Cyclic also. ठीक है? That means it's like this. Cyclic also. Let's take ABCD is a parallelogram. It's cyclic also. साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. प्रूव करना है रेक्टेंगल तो आपको एक एंगल 90 प्रूव करना है. टू प्रूव इट रेक्टेंगल यू नीड टू प्रूव दैट इट्स वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और सी इक्वल होंगे बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम. साइक्लिक है तो ए प्लस सी कितना होना होगा 180 डिग्री. अब सी के प्लेस पे रख दो. एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से क्या आया 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री. Now it's given a parallelogram whose one angle is equal to 90 degree. It means it's a rectangle. This was last question of exercise 10.5.